Well, no doubt. It's been the darkest weekend in a very, very long time. To have trawled through videos upon video of women and children being killed and kidnapped is something one wouldn't wish upon their enemies. Now imagine the plight of the Israeli people to see this unfolding in front of their eyes, in flesh and blood. To have children killed and caged, women stripped, raped and murdered, and then to be told, you asked for it. What is worrying particularly for India is how some within India are mouthing this both sides were at fault argument. In Aligarh Muslim University, a march was carried out in solidarity with Palestine. Now an FIR has been filed against 4 AMU students for marching in support of Palestine and several others booked for promoting enmity and marching in support of a terrorist group. थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में AMU कैंपस में शांति है। Now, while these students might be given benefit of doubt for being young and inexperienced, it is tough to rationalize India's grand old party's resolution. Congress' top decision-making body, the CWC, expressed dismay and anguish on the war and reiterated its support for the rights of the Palestinian people. AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with Palestine, Palestine. La ilaha illallah. La ilaha illallah. AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with Palestine, Palestine. La ilaha illallah. AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with Palestine, Palestine. La ilaha illallah. La ilaha illallah. AMU stand with कि गाजा की जो स्ट्रिप है आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको 16 ईयर से ब्लॉकेड है। ओपन एयर प्रिजन है वो। इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को। और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। എന്ത് രഹസ്യ നീക്കവും പിടിച്ചെടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമർത്ഥമായ പ്രതിരോധ ചാരസംഘടന എന്നെല്ലാം പുകഴ്ത്തപ്പെട്ട മൊസാദിൻ്റെ വലിയ പരാജയമാണ്. നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും കാണാത്ത കാര്യം, ഹമാസ് ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ ഭരണകൂടമാണ്. So what do you say when you can't condemn a murder for political reasons or otherwise? Well, you look for excuses. Here's what we have seen so far. Excuse number 1. Israel started it first. They went after Palestinians and then the whole world kept quiet. Excuse number 2. It's a reaction to Israel's action. They oppressed Palestinians who were left with no option but to kill, kidnap, maim and rape. Excuse number 3. It's a fight for land and self-determination, and this is a fight against occupation forces, and those are killed and kidnapped are like prisoners of war, not civilians. This, by the way, is almost a mirror reflection of what the Hamas itself said. Imagine for this to be mouthed by mainstream political parties in India. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर का संबंधित विषय एक्सटर्नल अफेयर्स का है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हो, भारत हो, हम कभी भी कोई वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते।
दुनिया में शांति रहना चाहिए, यही भी हमारा है। अगर जिसको ऊपर जाकर हम घुस के लोगों को, आम जनता को हत्या करेंगे, खून बहाएंगे, हम किसको भी समर्थन नहीं करते। यही भारत का स्टैंड है। देश का एक्सटर्नल अफेयर्स का पॉलिसी हम असदुद्दीन ओवैसी से, एमआईएम पार्टी से, रजाकारों से सीखना क्या? सभी कंट्रीज आज मोदी के साथ है। Can there be any justification to the horrific visuals that are coming of innocent women, children, elderly? Terrorism is terrorism, and anyone who's seeking to justify that, in effect, is only strengthening the hands of those who perpetrate such acts of barbarism against innocent people. The world has to stand one against terrorism.